ठीक है आंगुठी देखते हैं मुझे now welcome to you all to IQ Competitive Academy, the class devoted to English grammar, and it is a continuity of the last class. The last class we are dealing with the use and omission of article A and D. They all belong to the family of determiners. And if I say the determiner family, there are two parts. One is article, other is quantified. Clear? Article and quantified. We completed this part, the use and the omission also. Clear? Now today we will coming to this quantifier part, the use of quantifier. Clear? I always told in all classes that after a determiner there will always come a noun. Clear? Now, so we have proved it in last classes that after each article there was a noun. Yes or no? And equally, after each quantifier there will be a noun. Clear? Always mark it after quantifier. After quantifier, the noun will be either plural countable noun or uncountable noun. Clear? Categorically, quantifiers can never take singular countable noun. Clear? The choice is in between plural countable noun or uncountable noun. Okay. Now the question is, what is a quantifier? What is a quantifier? That what quantifies. Quantify means measure. Measure or मापिबा. मापिबा. तमने जी मापे से quantify. तले measure in what? Noun.
That means quantifier measures the quantity of the noun. Clear? Quantifier quantifies the quantity of the noun. And the noun shall be either plural countable noun or uncountable noun. Singular countable nouns can never be used after quantifier. Clear? Now, my question is, how many types of quantifiers are there? How many types of quantifiers are there? Two types of quantifiers. Two types. One is non-referential quantifier. Other is referential quantifier. Non-referential quantifier. Other is referential quantifier. And the total number of quantifiers are 30. Out of which quantifiers are 10. Out of which non-referentials are 4 and referentials are 6. Clear? Now, who are the non-referential quantifiers? Who are the 4? Who are the non-referential quantifiers? Let me see. I say quantifiers, non-referential and referential. What are the non-referential quantifiers? What is it? Much, many, lots of, a lot of. These four. Much, many, lots of, a lot of. Now come to referential. Few, a few, the few, little, a little, and the little. Clear? So, because quantifiers will always take a noun after it, quantifiers always take a noun after it, then non-referential quantifiers will take noun after it naturally. And referential quantifiers also take noun after it. Yes or no? That means much plus noun, many plus noun, lots of plus noun, a lot of plus noun. Equally, few plus noun, a few plus noun, the few plus noun, little plus noun, a little plus noun, the little plus noun. Clear? The nouns vary. The nouns vary. But they may be either plural countable noun, I told last class, also right now, it might be plural countable noun or uncountable noun, never singular countable noun. Clear? You must be very clear of it. Clear? Now I am coming to this non-referential quantifiers into a table. It will be helpful to you to understand the concept with the table. Now I am making a table of it. You can get the PPT of the table in later classes. You may be provided the PPT.
Now, NRQ. What is NRQ? Non-referential quantifier. What are the number? How many? 4. Clear? Now make the table. Clear? This one is for quantifiers. It is the noun the quantifier takes. Quantifier का कोई noun ना this one is sentence. से को sentence से use करा जाए. Correct? The first one is much. Okay. Much will always take. Much will always take. I keep you hanging. I keep you hanging. Much will always take a noun. Clear? What noun? Uncountable noun. बुझे much करे जो noun आसिबो that must be uncountable. अब कौन सा noun आसिबो नहीं. Clear? ताले एक का use कला करे से को sentence ना sentence either may be interrogative or negative. Sentence either be interrogative or negative. I will make examples of it. Now many will always take plural countable noun. Clear? Sentence is either interrogative or negative. The condition is same. It is interrogative negative, it is interrogative negative sentence. But the noun differs. Uncountable, it is plural countable noun. Now, the quantifier is lots of. The lots of the noun, it may take uncountable noun or plural countable noun. कुछ भी नहीं पाए, uncountable नहीं पाए, plural countable नहीं पाए. Sentence बना को always positive. Clear? Next, A लगता. ठीक है जी? ये कौन सा वो uncountable noun और plural countable noun. ये दुई मतलब जाते हैं कहीं. ठीक है जी? Sentence बनाओ positive. Okay? Now, these are the applications of non-referential quantifier. Now, we shall make examples. You can better understand. We can make examples. Suppose I say, he doesn't have dash knowledge. Market. He doesn't have dash knowledge. Clear? देखो moment का कोट होगा तो moment है. हमें right to left कुछ बात है. देखिए sentence. ताप देखिए को noun. Quantifier. Sentence now quantifier. Sentence negative. He doesn't have dash knowledge. Negative. Negative माने देखो. Adjective negative. आगे क्या चीज़? पता नहीं मुझे चलना. संकेत मुझे चलना. एडो क्या था? Noun देखो. से blank परे noun देखो.
ब्लैंक टा पर कोन अछि नॉलेज नॉलेज टा होछि नाउन नाउन टा कोन तमने हम छे कहले कोठी गले केटी गले ता कोन हो क्लियर बुझिला मच है सपोज maybe how does money do you want question mark how does money do you want clear ए बेसो सेंटेंस कोन अछि इंटरोगेटिव तले इंटरोगेटिव तले चलता है इट पहुंचला एबे सेंटेंस का ब्लैंक माने अछि नाउन टा मनी कोनटा कोन मनी टा अनकाउंटेबल मनी अनकाउंटेबल मनी जो होछि कि अनकाउंटेबल तो कैसे कोने किस तो कौन मच बुझिला तुझ पहला है नेक्स्ट पहले सपोज he does not have dash books he doesn't have dash books एबे को सेंटेंस बनाला नेगेटिव ठीक है अच्छा नेगेटिव माने नेगेटिव एट नेगेटिव तो कोन हम ले चल वैसे नाम बुक्स बुक्स का कोन नाम प्लूरल कौन लेट मी पुट प्लेस एडिकेशन कोन होता है बुझ पहला भूल करबल तो हैला he doesn't have many books suppose maybe how does friends do you have how does friends do you have कोन हो केम जानलन फ्रेंड एटा क्वेश्चन करथले इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव माने हम इमोशंस ठीक अछि एट पॉइंट्स नाम ता कोन छ फ्रेंड्स को नाम एडी प्लेसला तनसला इट विल कम एट ए फ्लो कोटे फ्लो पे आसीबो पूरा से ठीक आंसर रे पहुंची जिवो बुझिले अच्छा नाउ आई एम कमिंग आई से my father drinks dash water a day my father drinks dash water a day एबे बहुत सेंटेंस कोन अछि पॉजिटिव मन चॉइस को कैसे एटिक मैटिक हम नहीं तो अपने में चंद्र एट पॉजिटिव एबे नाउन प्लस वाटर को नाम होला अनकाउंटेबल कल कोठ जीवी एपट बस करबी तो नाम कुछ तल कोन हो लॉट्स ऑफ और एलेक्ट्रॉन बुझल जे तू लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडीशन का समान जो कि लॉट बस करबो कम से एलेक्ट्रॉन बस हेले तले माय फादर ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ My father drinks lots of or a lot of water a day. बुझ पाइला बुझिला डाउट पूछले कि कर परिबो निर्भुल गुड नाउ आई एम कमिंग टू application of referential quantifiers. Referential quantifiers एक संख्या कितना एक्सप्लेन करेगा कितना छोटा 6 numbers referential quantifier का पर कौन नंबर नाउन नंबर स्पेशल कौन नंबर
uncountable noun नचे plural countable noun है ना एक चॉइस में से चलेगा से सिंगुलर का स्पीड नहीं है ले नाउ मेक इट noun sentence एठी प्ले आउ गोटे कलम आस कोन आस और दो देखो एटा क्वांटिफायर एटा नाउन एटा सेंटेंस एटा होची गोटे इक्वेशन ए सेंटेंस रो आसो कोटे गोटे इक्वेशन वो इक्वेशन को सैटिस्फाई करले क्वांटिफायर का फिल कर बुझले तब प्रथम असले कि फ्यू शब्द कौन लगा को नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है को नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन से को सेंटेंस लगा एट नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं it takes the sentence with a force co-force negative force तुम मुझे देवी नेगेटिव फोर्स बना पॉजिटिव है अच्छा इक्वेशन दरकार होगा not equal to 0 greater than 0 less than 1/4 don't be confused clear करो चले ताकत लिखिए if you এটা मैथमेटिकल लिखिए तो मैथमेटिकल माइंड के थिको बुझिए if you कोन नको प्लूरल काउंटेबल ना सेंटेंस कोन नको नेगेटिव फोर्स क्लियर ये इक्वेशन कोन नको not equal to 1/4 greater than 1/4 less than 1/2 है नेक्स्ट असले the few है ये करना बहुत सही few फैमिली माने से प्लूरल काउंटेबल नाउन ना प्लूरल काउंटेबल नाउन एटी सेंटेंस बना हो पॉजिटिव फोर्स है इक्वेशन बना हो not equal to half greater than half less than 1 है बुझले 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 केन बुझले तो बुझे बुझले ना है तब असला लिटिल लिटिल करना को अनकाउंटेबल नाउन ठीक है ये सेंटेंस बनाबो नेगेटिव फोर्स इक्वेशन बनाबो ए इक्वेशन का एक पड़े से प्योर इक्वेशन का सेवा लिटिल हेलो अच्छा ए लिटिल बनाबो अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस बनाबो नेगेटिव फोर्स एक इक्वेशन का ये आपको पड़ेगा है ना तब प्रश्न तो लिटिल नाउन बनाबो अनकाउंटेबल नाउन क्लियर सेंटेंस बनाबो पॉजिटिव फोर्स दो फ्यूर इक्वेशन का ये आपको पड़ेगा है बर्तन कथा होची मो इक्वेशन गुडा को तार एप्लीकेशन करी बुझिले लेट्स टेक ए फिगर एन एग्जांपल
I say, you must have known, you are now reading in libraries. Libraries. Of course, right now, libraries are updated into e-library. E-library. You can never see the books physically. In books, you can never see the physical books. But if you go to the library of the different institutions like college, clubs, national libraries, you can find books. Yes or no? Physical books, offline. Clear? Now suppose it is a library. A library total book होची sorry तर 50 केते हो अधा केते हो 50 यार अधा केते 1 केते हो 25 এটা কেতে हो 0 এটা হচ্ছে তার নিউমেরিক্যাল সাইড গণনা যদি আমি কইবা এটা টোটাল বই সংখ্যা হচ্ছে n মানে n ভ্যালু কত আছে 100 তাহলে এটা কত হবে কইলো n বাই 2 এটা কত হবে n বাই এটা কত হবে 0 ক্লিয়ার বুঝিলা এবে আস প্রথম ইকুয়েশন টা अच्छा वही गुड़ा वो नाम करेगा बुक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन એટલે પ્લુરલ કાઉન્ટેબલ કહું છે એટલે સે કો ક્વોન્ટિફાયર કો ફિટ હબ ફ્યુ એ ફ્યુ દી ફ્યુ a little નેચરલ પ્લુરલ કાઉન્ટેબલ ଏବେ କୋଲେ ଏଇ ଇକ୍વેશન ଟା କୋ ଘର को ଫିଟ୍ ହବ ତିନଟା ଘର ହେଲା 1 2 3 फर्स्ट रो सेकंड एंड थर्ड এই ইকুয়েশন দেখো এই তিন ভিতରୁ কোডা ফিট কর সে কହୁଛି নট ইকুয়াল টু 0 0 নহে ক্লিয়ার 0 টু अधिका গোটে উনি हो 1/4 নহে ক্লিয়ার 1/4 গোটে কিছু ইউনিট কম তোমার কেতে হতে চল 1/4 রু কম 0 রু अधिका বুঝলে এইটা হচ্ছে গোটে কোয়ান্টিটি है ना तो इक्वेशन नाम कह जाए क्वांटम इक्वेशन क्वांटम इक्वेशन अर्थ कौन इक्वेशन ऑफ ए क्वांटिटी क्लियर তখন এইটা তাহলে মত কো ইকুয়েশন কোড ফিট হলো এই হলো হবে নাই এটা হচ্ছে নট ইকুয়াল টু 0 গ্রেটার দেন 0 লেস দেন 1/4 তাহলে এটা কোন হবে তাহলে এই ভিতরে যেটা বহি আসিলে 0 রু अधिका 1/4 রু কম যেতে বহি আসিলে সব কোন হবে ফিউ হবে আচ্ছা প্রথম সেন্টেন্স কହୁଛି ମୁଁ କହିବି I have 100 books okay and students have taken 13 books যদি 100টা হোল নম্বর ହେଲା ପିଲା କେତେ ପାଇ ନିଛନ୍ତି ତେରଟା ଭାଇ এটা বর্তমান কোয়ান্টিফায়ার ফর্মে এক্সপ্লেন কর কোন হত যে 100 ভিতর ফ্র্যাকশন কেতে হলা 13 বাই কেতে 100 আগে নাই কর তাহলে এটা কাহা কো ভিতর আসিব 13 বাই 100 টা কাহা ভিতর আসিব ফিউ আবার কি দেখো 0 রু अधिका देखो आगे नहीं 1/4 25 25 रो कम तामाने फ्यूर रेंज जब होल नंबर 100 हुए तले एटी फ्यूर रेंज ता केते हबो 1 रु 24 पर्यंत लेना जहां सब सब कोन हबे फ्यूर किंतु जदि रेफरेंस नंबर ता बढ़ी गला 1000 हे गला तले फ्यूर रेंज ता बढ़ी जबो एटा 250 हे जो ना आगे नहीं तो बुझो ना सिंपल ताले ताले कतना आंसर আসলে I have 100 books the
students have taken 13 books, so dash books have been issued. कौन हम लिखेंगे हिसाब करिबो एटी कोन बसबो 30 लिखिबो क्वांटिफाई करबो ना few books, so few books have been issued. बुझियला 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 समझते हैला वर्तमान आमे आउ तो बसला बर्तन कहले से गोटे क्वेश्चन नॉट इक्वल टू 1/4 greater than 1/4 प्रश्न not equal to 1/4 greater than 1/4 less than 1/2 ହେଲା ନା ତାହେଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିବ ଏଟା ହଁ କି ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ ମତେ କହିଲେ 100ଟା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ହେଲା ତାହେଲେ ଏ କ୍ୟୁଟା ର ମିନିମम ମ୍ୟାକ୍ସିମम କେତେ ହେବ ବୁଝେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ପଢିଛ এই চিন্তা পড়েছ 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 না তাহলে ফিউর যদি 100টা হোল নম্বর हुए ফিউর ইন্ডিকেশন কোন হবে কইলে কেতে 1 to 24 এসন যদি কহিবা এ ফিউ কেতে হবে 26 to 49 जदि 100टा होल नंबर होई जदि एटा होची रेफरेंस ताले द फ्यू केते हबो 51 to 99 केते 51 to 99 ये केबे होल नंबर को टच करबो ना कि को टच करबो ना 1/4 को ना 1/2 को ना 1 बुझियो ये खाली होल नंबर भीतर भीतर चलते है एटा क्वांटिटी ताले बटन कहले एक रूम कोठा हबो कोठा एठी n/4 n/2 ভিতরে হলা এটা হচ্ছে এক ঠিক আছে আদে एग्जांपल কইবি I have 100 books but students have taken suppose 36 books. So, dash books have been issued. Another? Clear? बुझिए देखो एटा क्लियर होछ नै तमे किसने न्यूमेरिकल कह देलो फॉर ऑल टाइम फार्मूला केते सब समय फार्मूला केते एक कह दो छुन देखो फ्यू एटा होते ऑल टाइम फार्मूला त केते हबो रेंज केते हबो 1 to 24 न केते हबो एटा तो n कहिनो एटा n हैला ले ना n ना तले 1 पास होएगा 1 रो केते आसीबो ना n/4 minus 1 क्लियर बुझल ना अब बुझला नहीं जैसे हमें एक ही को पहले हम लिख रहा हो वो n/4 plus 1 n/2 minus 1 ऑल टाइम फार्मूला है ना जैसे डी फ्यू कौन हबो वो n/2 plus 1 n minus 1 तमे n वैल्यू जहां पूछ पका बुझे ना n वैल्यू जहां पके वर्ष अनुसार चेंज बुझियो जे हैला समझ बुझ पाइलो अच्छा एबे कहले ए फॉर्मूलाटा ए इक्वेशन दा कोठ के सिंबल ना नहीं ए इक्वेशन दा कोठ के सिंबल ए घर कोठ के सिंबल से कोच n/2 अधिक एठु कम तने ए जो रेंज का अछि ए भीतर हम के पी फ्यू इक्वेशन पर इक्वेशन एजुकेशन तने का होछि द फ्यू दा घर तो एग्जांपल जब कहली आई हैव 100 बुक्स एंड स्टूडेंट्स हैव टेकन 89 बुक्स सो दैट बुक्स हैव बीन इशूड हे गला पूरा बुझी गलो
से भलिया लिटिल टा गोटे कथा मन कहे गोटे ग्लास अच्छी है ना गोटे ग्लास रे डू यू हैव द बॉटल यू हैव द वाटर बॉटल गिव द वाटर बॉटल है ना देखो जदि बॉटल ले पिले देखो एटा होछि पूरा बॉटल टा एटा होछि तर हाफ ये सब एटा होछि 1/4 एटा होछि पूरा हला जति पानीटा 1/4 तळु को रहिला हम को कहबा लिटिल नहीं 1/4 तळु को 1/4 तळु को आसला कोन कहबा लिटिल जदि हाफ तळु को आसला कोन कहबा ए लिटिल हाफ तळु को आसला जदि पूरा तळु को आसला टच करने कोन हबो लिटिल मत बर्तन को चिन्ह अंश रे केते पानी अछि को ए चिन्ह अंश रे केते पानी अछि एटा पे होछि तोर 1/4 केते अछि जदि एति पानी खाता कहतंता कंफ्यूज करनी क्लैरिटी सर एठी एसे कोन हबो एठी ले कोन हबो एटा को नाउटा क्लियर बुझियला तले हम केते चा पिउ फॉरेनर माने केते चा पियंती फॉरेनर माने केते चा पियंती लिटिल शहरी भारत केते चा पियंती ए लिटिल गांवली भारत केते पियंती कुंडे चाह ये सब नो सो क्वांटम क्लियर है ना एबे कथा होची कि फोर्स केवडा कोन ए फोर्स कोन नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स कोन तमे जानछो हाई स्कूल पढि छोडे पाठ पुनः पढि पढिछो पुनः पढि पढना मैथ रे हैं पुनः पढिछो जति संख्याटा डेसिमल पर थारु डेसिमल पर संख्याटा 50% अधिक हुए से नेक्स्ट नंबर पड़े तमे अध्यापक हेले जानिबो वैल्यूएशन रे केमती मार्क दिया जाए जो प्लान के मनकर 4.75 हमको जो प्लान रखिला 92.75 तकम पाइबो 93 क्लियर जो प्लान रखिला 92.26 तकम पाइबो 92 बैक करे 50% तो गला ने बैक करे 50% अधिक आला हेपड़ पळे अच्छा ताले मत को हेपड़ गला ने पॉजिटिव नेगेटिव 50% ऊपर गला आगो पळे तल पॉजिटिव न देखो 50% ऊपर गला कोन हो पॉजिटिव तल फोर्स को है बुझियला ए जे देखो 50% तळ को छै ना कोन है नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव फोर्स तो बहुत डिफरेंस है बुझियो छ ना माड खाइछ गोटे अच्छे नेगेटिव फोर्स माड गोटे नेगेटिव फोर्स माड अछि गोटे माड अछि नेगेटिव फोर्स माड कोन जानछ ना माड खाइबो समान काटिबो कष्ट हबो कि चिन्ह बन्न के ग्रोथ न दिबो बेतरे पिटा जीवो चिन्ह रहिबो दैट इज पॉजिटिव माड विद्या मरा जो जोर रे आतो चिन्ह रहिबो कि समान कष्ट हबो नेगेटिव फोर्स तू प्रूफ कर माड खाइछ बोली किंतु बेतरे काट दबो बुझले एक्जेक्टली सेम भलिया आमे देखछ निया देखछ ना निया जळु चाक प्रदो पड़ी जिवो पॉजिटिव निया लिपि जाछि माटी काटी गछि का पाड़ पके देबो पड़िबोनी नेगेटिव किंतु ताती अछि बुझियो छ ना कथा रे ताती निया रे ताती काम रे ताती तातो ठीक अछि कोन बुझियला फ्यू ए फ्यू दी फ्यू लिटिल ए लिटिल एटा होछि referential quantifier ro equation application तो proof को पढ़ले non referential much many lots of letter you got examples I am hopeful that you are clear of it and what are you expecting in the next class what are you expecting in the next class not from me, but from the class.
There is much a difference between me and class. Expect not from me, expect from the class. So what are you expecting in next class? The next class expectation of you must be the exam on quantifiers. Yes or no? Yes or no? Then the class is there. Okay? Thank you all for cooperating and understanding. I do not know whether you understand or not. You may be pretending to understanding it. Understand? But if you understand it well, if you fail to understand, you try to recap and replay the video classes and ask the doubts either in online or offline. Clear? I'm there with you to solve your problems. Okay? Thank you. Does the